Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Good morning, student. Previous class I discussed about the atomic radii. Next I will explain about the ionic radii. What is the meaning of ionic radii? The ionic radii may be defined as the effective distance from the nucleus of ions up to which it has an influence in the formation of ionic bond. Let me discuss about the ionic bond with an example. Suppose I want to take a ionic compound NaCl. There is a ionic bond between Na plus and Cl minus ion. But a particular distance रे Na plus कौन करिवो ना Cl minus को attract करिवो, Cl minus मध्य Na plus को attract करिवो. आमे यदि Na plus ର इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करिया, एटा होची तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ये ला K cell रे तार दुईटी इलेक्ट्रॉन रहबो, ये होची तार L cell, एटा तार 8टी इलेक्ट्रॉन रहबो. ये होची तार Na plus. Similarly आमे सपोज Cl minus ड्रा करिया चाहिए. ये ला K cell, this is your L cell, this is your M cell. There are 2 electrons present in the K cell, 8 electrons present in the L cell, another 8 electrons present in the M cell. This is your Cl minus. Suppose एटी द्वारा Na plus अच्छी, एटी द्वारा Cl minus अच्छी. एती की डिस्टेंस रे से मानकर किसी अट्रैक्शन हो नहीं. जहाँ पर हमें कौन करेगा ना Cl minus को Na plus पर कौन होगा. जहाँ पर R न्यूक्लियस I इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, R न्यूक्लियस I इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. मानकर एती की डिस्टेंस रे Na plus और Cl minus परस्पर अट्रैक्शन करूचंदी. माने Cl minus को सपोज मु 8 हानि रखिबी, एती की डिस्टेंस रे माने 8 थारु ए पर्यंत डिस्टेंस रे परस्पर आयन सपोज अट्रैक्शन करूचंदी. अट्रैक्शन कला परे आयोनिक बॉन्ड सपोज तयारी करले. ई जो डिस्टेंस तक हम कोन कहजे बिले इफेक्टिव डिस्टेंस. जो इफेक्टिव डिस्टेंस रो गोटिए न्यूक्लियस अन्य गोटे आयन रो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो. फॉर एग्जांपल Na plus रो न्यूक्लियस Cl minus रो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो. ऑन द सेम टाइम Cl minus रो न्यूक्लियस Na plus रो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो. सेही जो इफेक्टिव डिस्टेंस को हमें आयोनिक रेडी कहथाओ. सो ionic radii may be defined as the effective distance from the nucleus of ions up to which it has an influence in the formation of ionic bond. Next, I want to compare the radii of an ion with its parent atom. Suppose कहला हमें Li और Li plus एमानक भितरे काहर रेडी अधिक. अच्छा हमें Li रो यदि इलेक्ट्रॉन कथा कहबा 3 इलेक्ट्रॉन, Li plus रो 2 इलेक्ट्रॉन. Li plus रे जे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करिया, एटा ला हमर K cell, एटे दुईटी इलेक्ट्रॉन थिबो, एटा ला हमर L cell, एटे गोटिए इलेक्ट्रॉन थिबो. यदि हमें Li plus रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिया ताली ये ला हमर न्यूक्लियस, एटा हमर 2 इलेक्ट्रॉन थिबो. In case of Li,
the valency cell is L. In case of Li plus, the valency cell is K. Obviously, the radii of Li is greater than Li plus. So, we can conclude that the radius of positive ion, that is cation, is always smaller than that of the parent atom. For example, the radius of Li is greater than the radius of Li plus. Next, I want to compare the radius of an anion with its parent's atom. Suppose I want to take Cl minus, another is your Cl. The number of electron present in Cl minus ion is 18 electron. The number of electron present in Cl is 17 electron. The electronic configuration of Cl minus ion is like this. This is your K cell, here 2 electrons are present. This is your L cell, here 8 electrons are present. This is your M cell, here also 8 electrons are present. If you think about the chlorine atom, then this is your nucleus, here 2 electron present, here 8 electron present. This is your L cell, this is your M cell, here 7 electrons are present. In both the cases, the valence cell is the same, but in case of Cl minus ion, the number of proton is 17. Also in case of Cl, the number of proton is also 17. In case of Cl minus ion, 17 proton responsible for 18 electron, but in case of Cl, 17 proton take the responsibility of 17 electrons. So in case of Cl minus ion, the effective nuclear charge per electron is less than that of chlorine atom. We know that more is the nuclear force, lesser is the radii. That's why the radii of Cl minus ion more than the radii of Cl. From this example, it is clear that the radius of negative ion, that is anion, is always larger than that of the parent atom. For example, radii of Cl minus ion is greater than radii of Cl. Next, I want to think about the variation of ionic radii along the group and along the period. Suppose I want to think about the variation of ionic radii along group. Suppose I want to think about the group 1. H plus, Li plus, Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus, Fr plus. In case of H plus, there is no cell is present. In case of Li plus, there is only one cell is present, that is your K cell. In case of Na plus, there are two cells are present, one is your K cell, another is your L cell. If you think about the other ions, then what will happen? The number of cell goes on increases. That's why the ionic radii also goes on increases. Finally, I can conclude that the ionic radii in a particular group increases in moving from top to bottom due to addition of new cell. For example, ionic radii of H plus smaller than, Li plus smaller than, Na plus smaller than, K plus smaller than, Rb plus smaller than, Cs plus smaller than, Fr plus. Next, I want to compare the ionic radii of different isoelectronic ions. For example, N3 minus, O2 minus,
next is F minus, Na plus, Mg2 plus. Next is your Al3 plus. All the ions having same number of electrons, so they are called isoelectronic ions. If you will think about these ions, then in all the cases the number of electron is same, but the number of proton goes on increases from N3 minus to O2 minus. Then it also increases from O2 minus to F minus, like that. That means in case of L3 plus, the number of proton is maximum. Since the number of proton increases, that's why the nuclear charge also increases. In case of L3 plus, the nuclear charge is more as compared to the other, so L3 plus ion having less ionic ready as compared to the other. I can write the order of ionic ready like this: N3 minus greater than O2 minus greater than F minus greater than Na plus greater than Mg2 plus greater than L3 plus. Remember an important point: what is the isoelectronic species? Isoelectronic species may be an atom or ion or molecule, but these species must have same number of electron. That means an atom or ion or molecule having same number of electron but different nuclear charge are said to be isoelectronic species. For example, here Na plus, N3 minus, O2 minus, F minus, Mg2 plus, Al3 plus, CH4, H2O, HF, NH3. In all the cases, the number of electron is same. Also, if you will think about the neon having also 10 electron. So, in all the cases, the number of electron is same, but the number of proton is different. So, this type of atom or ion or molecules are said to be isoelectronic species. This is all about your ionic ready. Next, I will discuss about the ionization energy. Ionization energy also considered as ionization potential. It is also considered as ionization enthalpy. What is the meaning of ionization energy? Ionization energy defined as the amount of energy required to remove an electron from the valency shell of an isolated gaseous atom, resulting in the formation of unipositive ion. Let me explain with the example. Take an example, sodium. The electronic configuration of sodium is drawn like this. This is your K cell, 2 electron present in K cell. This is your L cell, here 8 electron are present. In M cell, only 1 electron is present. In the valency cell, only 1 electron is present. The amount of energy required to remove an electron from the valency cell of an isolated gaseous atom, resulting in the formation of unipositive ion, that is called ionization energy. तार अर्थ पिले एठारु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करिवो
बाहर कला परे सोडियम टा कोन रे कन्वर्ट हो Na+ रे कन्वर्ट हो सोडियम रु गोटे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल रु बाहर करिवो बाहर कला समय रे जेति के एनर्जी आवश्यक पड़िवो सेति के एनर्जी को हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कहि थाओ किंतु कंडीशन कोन बिले सोडियम टा गैसियस स्टेट रे रहबा दरकार आ आइसोलेटेड हेबा दरकार ता माने गोटिए आइसोलेटेड सोडियम एटम रु गोटिए इलेक्ट्रॉन बाहर करिवो वैलेंसी शेल रु कला समय रे जेति की एनर्जी आवश्यक पड़िवो ताहाकु तार आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाय द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोजूल मोर इनवर्स और किलो कैलोरी मोर इनवर्स these are the units of ionization energy मन रखिले आयोनाइजेशन एनर्जी ए जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मध्य थिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रो एग्नेस्ट रे जाउची जदी गोटे न्यूक्लियस टाइटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखि थिबो ताले अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी आवश्यक पड़िबो जदी गोटे एटम रो बहुत कम एनर्जी देई यदि इलेक्ट्रॉन बाहर करि दिया जाउची जानिबे तार आयोनाइजेशन एनर्जी कम तार आयोनाइजेशन एनर्जी कम कहवा अर्थ सेही एटम रो इलेक्ट्रॉन लॉस हेबाटा इजी तो मन रख स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी easier the removal of electron from the valency shell similarly think about the magnesium रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करिवो बाहर कला परे से Mg+ हबो जेति की एनर्जी आवश्यक पड़िला ताको हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कहबा किंतु रिमेंबर this energy is called fast ionization energy पुणी थरे यदि Mg+ रो पुणी अनदर इलेक्ट्रॉन यदि तमे रिमूव करिवो ताले से हो Mg2+ आउ सेठारे जो आयोनाइजेशन एनर्जी व्यवहार कराबो ताको हमें आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोली कहितो दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी this is your first ionization energy this is your second ionization energy एई रूपे तमे first ionization energy second ionization energy third ionization energy fourth ionization energy तमे लिखि परिबो first ionization energy related to the removal of first electron second ionization energy related to the removal of second electron third ionization energy related to the removal of third electron like this suppose हमें magnesium कथा कहबा बोले magnesium रो atomic number 12 suppose एटा magnesium रो न्यूक्लियस हैला तो magnesium रो k शेल रे 2 इलेक्ट्रॉन रहबो l शेल रे 8 इलेक्ट्रॉन रहबो m शेल रे 2 इलेक्ट्रॉन रहबो magnesium रो न्यूक्लियस रे बिले 12 प्रोटॉन अछि देखो पिले एठारे मैग्नीशियम रो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन अछि किंतु मैग्नीशियम रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कर देला परे Mg+ रे वर्तमान 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन अछि वर्तमान देखो 12 प्रोटॉन द्वारा जो भी न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट हो दैट टाइटली बाइंडिंग द 11 इलेक्ट्रॉन किंतु एठारे कोन अछि पिले 12 प्रोटॉन थिला 12 इलेक्ट्रॉन मध्ये थिला तेणु अपेक्षा एठारे वर्तमान इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी गला यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी गला पिले ताले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एठारे इलेक्ट्रॉन बाहर करियाटा जति की सहज होतिला वर्तमान एठारे इलेक्ट्रॉन बाहर करियाटा वेरी डिफिकल्ट हो कोन पई ना एठारे 12 प्रोटॉन को 12 इलेक्ट्रॉन थिला किंतु एठारे 12 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन हला वर्तमान एठारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी गला तेणु एठारो इलेक्ट्रॉन बाहर करियाटा वेरी डिफिकल्ट तेणु मन रख पिले एठारे Mg
+1 रो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करिवाटा वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू Mg अपेक्षा Mg प्लस रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर करिवा पई अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी आवश्यक पड़े तेणु मन रख एठारे I1 स्मॉलर देन I2 जेते तमे बिले इलेक्ट्रॉन बाहर करि जाउथिबो सेते तमारो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी बढ़ी जाउथिबो जा फळे रे इलेक्ट्रॉन बाहर करिवाटा बहुत कष्ट। सिमिलरली हमें देखिबा एल्युमिनियम कथा कहबा एल्युमिनियम रो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कला अदक हमें E1 बोली कहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कला परे एल्युमिनियम L+ को कन्वर्ट होला बदन अगेन सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर कला ताको हमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहबा आ जा फळे L2+ क्रिएट हो L2+ रो पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कले L3+ आ तार करेस्पोंडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी को हमें I3 बोली कहबा बर्तमान एठी देखो I1 स्मॉलर देन I2 स्मॉलर देन I3 therefore I can write IE1 smaller than IE2 smaller than IE3 smaller than IE4 like this. Next I will explain about the variation of ionization energy. At first I will explain about the variation of ionization energy along a group. Suppose हमें group 1 element कथा कहबा ग्रुप 1 में थिबा एलिमेंट गुडा कहला हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम हाइड्रोजन ला यदि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखिबा तले येला तार न्यूक्लियस येला k सेल रे गोटी इलेक्ट्रॉन थिबो सिमिलरली हमें लिथियम रे यदि देखिबा तले येला तार न्यूक्लियस येला तार k सेल एठारे दुईटी इलेक्ट्रॉन थिबो नेक्स्ट this is your L cell here one electron is present. Look at that this electron is not closer as compared to this electron. The electron present in the hydrogen is closer to the nucleus, so this electron tightly binded with the nucleus. That's why it is very difficult to remove this electron as compared to this electron. This electron can easily removed, so the ionization energy of lithium is less as compared to the hydrogen. From this it is clear that if the size increases, then the electron away from the nucleus, as a result, less amount of energy is needed to remove that electron. That means the size depends upon the ionization energy inversely. If the size goes on increases, then the ionization energy goes on decreases. That's why the ionization energy of hydrogen is greater than lithium, then lithium greater than sodium, then sodium greater than potassium, potassium greater than rubidium, rubidium greater than cesium, cesium greater than francium. From this example, it is clear that the ionization energy goes on decreases from top to bottom of a group. Next, I will discuss about the variation of ionization energy along a period. Suppose I want to think about the second period. The elements present in the second period are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. We know that the atomic radii goes on decreases from left to right of the modern periodic table along a period. We know that if the atomic radii goes on increases, then the electron away from the nucleus, as a result, it is very easy to remove that electron. That's why in case of neon, the ionization energy is more as compared to the other, because
the atomic radii goes on decreases from left to right. So according to this concept, I can write the order like this. But remember an important point: if an atom present in the stable form, then it is very difficult to remove an electron from the valency shell of that atom. यदि गोटे आटम स्टेबल होगी से केस रे इलेक्ट्रॉन बाहर करवाटा बहुत डिफिकल्ट अटे। यदि आम लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा ताले कोन हो 1s2 से भाया बेरिलियम रे देखिले 1s2 बोरॉन रे देखियो ताले आसीओ 1s2 2p1 कार्बन रे देखिले हो 1s2 2p2 नाइट्रोजन रे देखिबा ताले कोन आसी 1s2 2p3 ऑक्सीजन रे देखिबा 1s2 2p4 क्लोरीन रे देखिले कोन हो 1s2 2p5 नियम हो 1s2 2p6 मन रखबिले यदि एटॉमिक रेडी बढ़ुची ताले इलेक्ट्रॉन टा दूरे दूरे जाउची जा फल इलेक्ट्रॉन बाहर करैटा सहज होची तेणु आयनाइजेशन एनर्जी कम होची। किंतु अन्य गोटे पॉइंट मन रख यदि गोटे एटम स्टेबल होई अछि से केस रे इलेक्ट्रॉन बाहर करैटा बहुत डिफिकल्ट आ से केस रे अधिक एनर्जी दबाक पड़ी थाए तेणु से प्रकार एटम रो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होई थाए। आमे जानि जे यदि गोटे ऑर्बिटल टी हाफ फिल अछि ताले स्टेबल we know that the half filled and full filled orbitals are more stable. The full filled orbital are more stable as compared to the half filled orbital. देखो बिले एटे 2s1 अछि या हाफ फिल अछि तने ये स्टेबल बोले हम कहि परिबा। नामे बेरिलियम कथा देखिबा ताले बेरिलियम रो फुल फिल अछि ये मध्य स्टेबल बोले हम कहिबा। किंतु आमे यदि बोरॉन कथा देखिबा बोरॉन रो ये ना हाफ फिल ना फुल फिल तेणु आको आमे अनस्टेबल बोली कहिबा। नेक्स्ट आमे जेबा पले कार्बन रो 2p2 अछि 2p3 बा 2p6 थिले स्टेबल हे थांदा किंतु 2p3 अछि तेणु एटा को मध्ये आमे अनस्टेबल बोली कहिबा। किंतु नाइट्रोजन कथा यदि कहिबा नाइट्रोजन रो 2p3 अछि दैट मींस इट इज a half filled orbital, so nitrogen is stable. से परि हमें ऑक्सीजन रे देखिबा ऑक्सीजन रो 2p4 अछि तेनो ये नंबर हो अनस्टेबल। फ्लोरीन रो 2p5 अछि तेनो ये मध्य अनस्टेबल। किना हम यदि नियम कथा देखिबा नियम रो 2p6 अछि तेनो ये हला हमर स्टेबल। मन रखबिले ये जो ऑर्डर लिखी जे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडी कमिया जगो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ीची किना हम यदि स्टेबिलिटी को ध्यान दबा ताले जो एटम स्टेबिलिटी दृष्टिरो मोर तार आयनाइजेशन एनर्जी अधिक थाए। हम यदि लिथियम और बेरिलियम कथा कहबा लिथियम रो हाफ फिल्ड अछि बेरिलियम रो फुल फिल्ड अछि तेनो बेरिलियम is more stable than lithium. Stability अनुसारे बेरिलियम रो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक रहबो एज कंपेयर टू द लिथियम। ऑलरेडी से अछि जेटा कि हमें आगरो एटॉमिक रेडी अनुसारे सजे के रखिचे तेनो ए ऑर्डर करेक्ट अछि। नेक्स्ट चेक करिया बेरिलियम को बोरॉन। बेरिलियम बोरॉन थारो स्टेबल अटे तेनो स्टेबिलिटी दृष्टिकोण रो बेरिलियम रो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक हो एज कंपेयर टू बोरॉन किंतु एटॉमिक रेडी हिसाब रे बोरॉन रो एटॉमिक रेडी कम अटे एज कंपेयर टू बेरिलियम। सो बोरॉन रो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक बोली लिखा हेतिला किंतु हमें स्टेबिलिटी को यदि प्रायोरिटी दबा ताले बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन बोरॉन तेनो एठारे ऑर्डर टिके चेंज हो दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। एठारे हमें स्टेबिलिटी को ध्यान दे ऑर्डर चेंज करिया पड़िबो। तापर चेक करिया ऑर्डर ठीक अछि ना नहीं
बोरॉन को कार्बन चेक करिया बोरॉन हो अनस्टेबल कार्बन मध्ये अनस्टेबल उभय अनस्टेबल हेतिया जो आमे स्टेबिलिटी अनुसार किछ ऑर्डर काढिया दरकार नाही किंतु आमे साइज देखिबा एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज लेस देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन तेणु से दृष्टिकोण रो कार्बन आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक अछि बोरॉन तेणु ऑर्डर टी ठीक अछि अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडी तापरे आमे देखिया कार्बन को नाइट्रोजन रेडी हिसाब रे कार्बन रो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन स्टेबिलिटी दृष्टिकोण रो नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन स्टेबिलिटी दृष्टिकोण रो मध्य नाइट्रोजन रो आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन ठार अधिक तेणु ये मध्य करेक्ट अछि नेक्स्ट देखिया नाइट्रोजन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनस्टेबल नाइट्रोजन स्टेबल तेणु ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी कम हेबा था नाइट्रोजन अपेक्षा किंतु एठारे नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी कम अछि एज कंपेयर टू ऑक्सीजन तेणु हम एठारे चेंज करियो पड़ियो कारण द स्टेबिलिटी इज मोर important than the atomic ready stability अनुसार आयोनाइजेशन एनर्जी काढिया बहुत इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू द एटॉमिक रेडी तापरे देखिबा ऑक्सीजन को फ्लोरीन ऑक्सीजन अनस्टेबल फ्लोरीन मध्ये अनस्टेबल किंतु फ्लोरीन रो एटॉमिक रेडी कम ऑक्सीजन अपेक्षा तेणु फ्लोरीन रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक अछि एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एठारे मध्ये करेक्ट अछि नेक्स्ट देखिबा नियन नियन स्टेबल तेणु स्टेबिलिटी दृष्टिकोण नियन आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक हला फ्लोरीन ठार तमाने करेक्ट ऑर्डर कोन हला लिथियम स्मॉलर देन बेरिलियम बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन बोरॉन स्मॉलर देन कार्बन कार्बन स्मॉलर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्मॉलर देन फ्लोरीन फ्लोरीन स्मॉलर देन नियन from this example it is clear that except the atom having somewhat stable electronic configuration the ionization energy increases from left to right in a period तार अर्थ स्टेबल एलिमेंट को छाडी देला परे अन्य एलिमेंट मानकर आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करूछ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर affecting the ionization energy फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज यदि एटॉमिक साइज बा आयनिक साइज यदि बढ़े ताले तमर आयोनाइजेशन एनर्जी कमे नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी यदि गोटे एटम मोर स्टेबल हे अछि ताले तार इलेक्ट्रॉन गुडा भल भाबरे टाइटली न्यूक्लियस द्वारा थिबे तेणु सेठारे अधिक एनर्जी आवश्यक पड़ियो से इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पे तेणु रिमेंबर more is the stability more is the ionization energy next is your nuclear charge if more is the nuclear charge more is the ionization energy कारण यदि न्यूक्लियर चार्ज अधिक रहिला ताले वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंडेड बाय द न्यूक्लियस as a result it is very difficult to remove that electron we need more energy to remove such type of electron so remember more is the nuclear charge more is the ionization energy next is your screening effect more is the screening effect lesser is the ionization energy next is your penetration power more is the penetration power more is the ionization energy the penetration power of S subcell is more than P more than B more than F so the ionization energy of S subcell is more than P more than B more than F these are the factors affecting to the ionization energy next I will explain about the screening effect. Let me explain the screening effect with an example. Suppose this is the nucleus of an atom. This is your K cell, this is your L cell. Here two electrons are present. Here one electron is present. This is the nucleus. Here two electron is present in K cell.
here also one electron present in the L cell. In this diagram, there is no forbidden between the nucleus and the electron. ए diagram रे nucleus और electron मझे कौनसी extra electron नहीं. किंतु ए diagram रे nucleus और valence electron मधे रे दुईटी electron अच्छी. जाफଳରେ एठारे किछि forbidden create हो. In this case, there is reduction of effective nuclear charge on this electron cloud due to presence of these two electrons. But in this case, the effective nuclear charge directly apply on the electron. There is no reduction of effective nuclear charge. एठारे किछि nuclear charge रो loss होबो, reduction होबो. एठारे किछि भी effective nuclear charge loss होबो नै. ये जो difference रहिला effective nuclear charge, से जो difference कम में create होला due to the presence of this electron cloud. Such type of effect is called screening effect. The screening effect is one type of effect which causes the reduction in the effective nuclear charge on the electron cloud due to a difference in the attraction force of the electron on the nucleus. The screening effect is also called shielding effect. The shielding effect is also called atomic shielding. Next I will explain about the penetration power. Penetration power is the ability of an orbital to attract an electron. गोटे orbital रो attracting power टाको हमें penetration power बोली कहता हो. Since the s orbital is nearer to the nucleus as compared to the p orbital, d orbital and f orbital, so the penetration power of s orbital is more than as compared to the other orbital. If the orbital tightly held the electron, then it is very difficult to remove that electron. So we need more amount of energy. As a result, the ionization of that electron is more. In case of s orbital, the penetration power is more. That means the s orbital having more ability to attract the electron towards itself. That's why it is very difficult to remove an electron from the s orbital. As a result, the s orbital having high ionization energy. That is all about the ionization energy. Next I will explain about the electron affinity. It is also called electron gain enthalpy. Symbol is your EA or E. It is just reverse of the ionization energy. Ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to form a unipositive ion. But if you think about the electron gain enthalpy, then it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy level to produce an anion. Let me explain the electron affinity by taking an example. Suppose take an gaseous isolated chlorine atom. This is the diagrammatical representation for chlorine atom. Here 2 electron present. Here 8 electron present. Here 7 electron present. Suppose मु क्लोरीन एटम को गोटे इलेक्ट्रॉन देबी. से इलेक्ट्रॉन डी केउंटे रहइबो ना लोएस्ट एनर्जी लेवल रे रहइबो.
सबुठारु लोएस्ट एनर्जी लेवल है पहले के सेल किंतु के सेल फिलअप अछि तापरे आसे हमें एल सेल मध्य फिलअप अछि तापरे आसे हमें एम सेल रे वर्तमान से इलेक्ट्रॉन आसी की रहइबो एम सेल रे जेबे से इलेक्ट्रॉन आसी रहइबो सेही समय रे जो एनर्जी रिलीज हबो से एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोली कहिथाउ जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन Cl को दिया जाए सेतेबेले Cl कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस देखो ये जो आयन ऊपर 1 यूनिट रो नेगेटिव चार्ज अछि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एटेड इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ ए न्यूट्रल gaseous isolated atom to form a unique negative ions. That released energy is called electron affinity. सेपरि आमे बिले सपोज नाइट्रोजन नबा नाइट्रोजन को गोटे इलेक्ट्रॉन दबा से n- रे कन्वर्ट हो आ से समय जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अछि तको आमे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोली कहबा अगेन पुनी गोटे इलेक्ट्रॉन हमें n- को दबा से n2- रे कन्वर्ट हो से समय जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिले तको हमें E2 कहबा E2 कहबा अर्थ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन पुनी एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन n2- दबा ताले से कन्वर्ट हो n3- और से समय रे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमें E3 कहबा E3 कहबा अर्थ थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्तमान देख बिले एठारे नाइट्रोजन गोटे न्यूट्रल एटम तमे गोटे इलेक्ट्रॉन देलो सी एनायन रे कन्वर्ट हैला एनायन रो चार्ज हैला बिले नेगेटिव पुणी सेकंड इलेक्ट्रॉन देला समय रे ए नेगेटिव चार्ज को ए इलेक्ट्रॉन भितर रिपल्सन हो काहे बिले इलेक्ट्रॉन रो चार्ज मध्ये नेगेटिव आमे जानि जे सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एठारे देखो न्यूट्रल थिला नेगेटिव चार्ज देला किछि प्रॉब्लम नै किंतु एठारे ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है कि अछि ताको पुणी आउथरे गोटे नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल दिया हला तेणु एठारे गोटे रिपल्सन क्रिएट हो तेणु ए केस रे n- रो एफिनिटी टुवर्ड्स द सेकंड इलेक्ट्रॉन goes on decreases एठारे टिके टेंडेंसी कमिबो electron affinity is nothing but the tendency of an species to gain the electron तेणु एठारे कम एनर्जी रिलीज हो कारण there is a repulsion between the n-1 and electron जेतेबे सेकंड इलेक्ट्रॉन n- को दिया जाए सेतेबे से n2- रे कन्वर्ट हो जाए पुणी आउरी नेगेटिव चार्ज बढ़ी जाए थर्ड इलेक्ट्रॉन को देला समय रे एटारे जति रिपल्सन होतला एटा आउरी अधिक रिपल्सन हो तेणु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पुणी कमी जिवो कहबार मीनिंग हैला E1 greater than E2 greater than E3 greater than like this. Next I will explain about the variation of electron affinity. The electron affinity value generally increases on moving from left to right in a period. This is due to decrease of the atomic size. Remember, if the atomic size goes on decreases, then the nucleus have more tendency to attract the added electron. So remember, the electron affinity value is indirect proportional to the atomic size. If the atomic size increases, then the electron affinity decreases. On the other hand, in moving down a group, the electron affinity value generally decreases. This is due to steady increase in the atomic radius of the element. But there are some exceptional cases also found. Let me explain the electron affinity with an example.
Suppose take group 17 elements. The group 17 elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine. The atomic rating of group 17 element goes on increases from fluorine to iodine. That's why the electron affinity goes and decreases from fluorine to iodine. So I can write like this: the electron affinity of fluorine greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine. किंतु फ्लोरीन रो बिले एटॉमिक साइज बहुत कम. फ्लोरीन रो एटॉमिक साइज बहुत कम हेतिबा जुगु जो इलेक्ट्रॉन आमे फ्लोरीन रे ऐड करिवा से एडेड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन रे आगर थिबा इलेक्ट्रॉन भितरे रिपल्सन हबो. तेनो फ्लोरीन रो टेंडेंसी के कमी जिवो जा फଳରେ फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेसर देन क्लोरीन हबो. सो हियर आई कैन राइट the electron affinity of chlorine smaller than the electron affinity of chlorine. The low electron affinity of chlorine as compared to the electron affinity of chlorine is due to the small size of the chlorine atom. Next I will explain about the factors affecting to the electron affinity. First point is greater the atomic radii of atom, lower will be the value of electron affinity, because greater the atomic radius of the atom, lesser will be the attraction of the nucleus to the electron to be added. Second point is greater the effective nuclear charge, higher will be the value of electron affinity. This is because greater the effective nuclear charge, more is the attraction of the nucleus. Third point is the element which having stable electronic configuration have low value of electron affinity. The affinity may be also equal to 0 or nearly equal to 0. Next point is more is the penetration power of the subshell of the valency shell, more is the electron affinity. The electron affinity also depends upon the type or shape of orbital. The order of decreasing of electron affinity is S greater than P greater than D greater than F. That means S orbital having more electron affinity. This is all about your electron affinity. Thank you.